কেতিয়াবা মনটো যে ইমান বেয়া লাগে মানে একো মানে বহুত বেয়া লাগে একদম কিবা মানে এনেকুৱা মোবাইলত মানে এইবোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ'ও বনাই থাকিব মন নাযায় নবনাও যা এনেকুৱা তাৰপিছত মানে একো ফালৰ পৰাই মটিভেশ্যন নাপাওঁ কি কৰিম কি নকৰিম মনটো বহুত বেয়া লাগি থাকে আৰু এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা লাগে মানে যদি একাপ ধুনীয়া গাখীৰ দিয়া চাহ আদা তেজপাত ইলাচি দি যদি একদম পূৰা গাখীৰতে ডাঠকৈ বনাই দিয়া যায় যদি একদম ধুনীয়াকৈ দুখন বিস্কুট লৈ যদি খাই দিব পাৰিলোঁ হয় ন তেতিয়া চাগে অকণমান ষ্ট্ৰেছটো অকণমান মাইকী মানুহৰ ন ষ্ট্ৰেছটো তেনেকৈ কম হয় নেকি আচলতে বেলেগৰ কথা বেলেগৰ সুখ দুখৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে বেলেগৰ সুখী কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ জীৱনটো মানে এফালৰ পৰা গৈ থাকে লাইফটো তাৰপিছত এনেকেই এদিন বয়স হ'ব বুঢ়ী হ'ম মাইকী মানুহৰ আশা সপোন চব চেচ বিয়াৰ আগতে যি সপোন দেখিছিলা যেনেকৈ লাইফটো কটাম বুলি ভাবিছিলা মানে যি কৰিলা বিয়াৰ পিছত আৰু সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যায় নতুন এটা পৰিৱেশত নিজৰ সপোনবোৰ চব মানে জলাঞ্জলি দিব লগা হয় আৰু কি ক'ম আৰু মেইনলি আমি মাইকী মানুহবোৰে যিমান সপোন দেখিলোঁ বিয়া হোৱাৰ পাছত দুই এগৰাকীয়ে সেই সপোন পূৰণ হয় যি কি নহওক মনটো খুব বেয়া হোৱা কাৰণ বহুত আৰু ছোৱালী ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমনি কৰিলে কাপোৰ তাইক যে কিমান চেঞ্জ কৰিবলগীয়া থাকে পেচাব কৰিব আৰু কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিবলৈ টান পায় তাইৰ লগতে কেটকেটাই মোৰ একেবাৰে মোৰ চোৰ ঘূৰাই গৈছে দুপৰীয়া আকৌ ভাত বনাবলৈ হ'বই বাৰু যি কি নহওক চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো মই মাংস বনাব লৈছোঁ আৰু পোৱালিটো জেনলিন আহিছে কেঁচা বনান আছে ই লাজ কৰিছে মই কৈ দিম বাৰু ই কি ক'ব লাগিছে মানে মই ইয়াৰ মাংস থৈ দিছোঁ আৰু ই ক'ব আহিছে কৈ দিম বাৰু পিছত ये मीट को तेल में अलग सा फ्राई कर लेना हाँ अलग सा फ्राई करना है उसके बाद फिर इसे हल्का सा फ्राई करने का या में तेल में पहले लहसुन प्याज उसके बाद जो भी आलू वगैरह सब्जी होगा उसको हमें फ्राई कर देना है पहले हल्का सा नमक का साथ लहसुन और प्याज को फ्राई करना है उसके बाद में आलू अगर डालेगा तो आलू को भी अलग सा तेल में फ्राई कर लेना है मीट के साथ उसके बाद फिर आलू डालो या वो डालो मीट डालो चलेगा लेकिन वो सब फ्राई होने के बाद जो छोटा मोटा इंग्रेडिएंट्स को डालेगा उसके बाद ये जब डालेगा सब्जी ये मीट डालने से पहले मसाला सब डाल देना है जो अगर हल्दी डालेगा मीट मसाला डालेगा गरम मसाला या तो ये लाल मिर्च सब डालने के बाद उसके बाद थोड़ा देर के बाद ये सब डालने उसके बाद बाकी आप बनाइए उसके बाद वापस और मसाला डाल सकते हैं मैंने तुम मैंने ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए फ्राई भी नहीं चाहिए थोड़ा सा पानी और मसाला का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा डालिए एक बार छोटा सा इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करते समय भी और ये लास्ट में भी डालना पड़ेगा लास्ट में भी थोड़ा सा डालिए लेकिन ये सब डालने के बाद डालिए ये सब डालने के बाद डालिए उसके फिर नमक भी वापस थोड़ा डाल दीजिए उसके बाद पकने दीजिए ये पानी का अमाउंट तो डालते रहिए ना बनाएगा तुम सूखने के बाद बनाएगा अंडी हो जाएगा हम तो बनाओ सभी ठीक है लिखो तो उसके बाद फिर पानी का अमाउंट पकने के बाद वापस जब सूख जाएगा और एक बार पानी का अमाउंट डाल दीजिए उसके बाद देखिए जब पक जाता है जब पकने वाला मोमेंट होगा तो वो लास्ट मोमेंट में और एक बार पानी डालने के बाद वो पानी सूख जाने का एकदम सूखने मत दीजिए थोड़ा जब ग्रेवी लेवल में आ जाएगा तब बंद कर दीजिए थैंक यू আৰু সি কোৱা মতেই এনেকৈ মই আজি মাংসটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সি নগা ল'ৰা হয় এনেকৈ চাগে খাই ভাল পায় অলপ অলপকৈ প্ৰথমতে মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এনেকৈ কৰিলে জলদিনে মোক কৈ থকাতকৈ মানে মোক অলপ হেল্প কৰিবলৈ আহি গ'ল আৰু এয়া বনাই আছে টেষ্টি যাওঁ কি ধুনীয়া কি ঘৰ সিহঁতে বাথৰুমত দেখিছে নহয় দেখাই দিওঁ মানে ছোৱালীতকৈ সিহঁতে ভালকৈ কেয়াৰ লয় খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ ঘঁহা হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত